Hello everyone, welcome to my channel. I'm Michelle and today I'll show you very Christmassy vibe makeup look. So let's begin. Okay, so first I'm concealing my eyes. By the way, I got the idea for this makeup look from Pinterest. Then I set my eyes with compact powder. It's winters and you don't need that much powder. But I have oily skin, so I want my makeup to be long lasting. Okay, that's it. Next, I'm control my face with Christine's controlling with this shade. As everyone knows, controlling is a game changer for your face. Why? Because it gives you a very subtle structure. Because I have chubby face, so this jaw area and my forehead area is very important for me because I have big forehead. So yeah, I apply on that. Next is my nose area. So mostly मैं फिंगर से ही अपने नोज पे कंट्रोलिंग करती हूँ और दिस टेक्निक आई सॉ इट ऑन यूट्यूब एंड इट वर्क्स वेरी वेल सो आई तो लव इट. ओके, सो नेक्स्ट मैं पिंक आई पेंसिल लूँगी जिससे हम इस तरीके से क्रीज ड्रॉ करेंगे. ओके, सो जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको वैसे ही ड्रॉ करना है. एंड व्हेन यू ड्रॉ योर क्रीज आपको साथ साथ चेक करना है कि जब आप आइज़ खोल रहे हो तो आपकी क्रीज छुप तो नहीं रही है, बिकॉज आपको आइज़ के थोड़ा सा ऊपर क्रीज को ड्रॉ करना है ताकि अगर आप आइज़ खोलो भी तो आपकी क्रीज नज़र आनी चाहिए. Then you want this color and blend your crease very gently like this. And as you can see that जो लाइन आपने ड्रॉ की थी उसके अपर साइड पे आपको ब्लेंडिंग करनी है just like that. नेक्स्ट यू वांट कंसीलर और जो लाइन आपने ड्रॉ की थी उसी को ही फॉलो करते हुए आपको कट क्रीज ड्रॉ करनी है. बट एज आई से बिफोर कि जब आप आइज़ खोलो तो आपकी क्रीज नज़र आनी चाहिए, तो ये आप ज़रूर चेक करें बिकॉज आप किसी फंक्शन पे जाते हो तो ऑल टाइम आप आंखें बंद करके नहीं रखते हो. आप पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हो तो आप आंखें खोल के करवाते हो, तो अगर आपकी क्रीज ही छुप जाएगी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी. तो यू शुड नॉट फॉरगेट दिस. नेक्स्ट यू वांट दिस लाइट पिंक शेड एंड अप्लाई योर आईलिड्स एंड रिमेंबर दैट व्हेन एवर यू डू योर कट क्रीज कि अगर आप सेम शेड्स अप्लाई कर रहे हो ऑन योर क्रीज एंड ऑन योर आईलिड्स तो मेक श्योर कि आपके दोनों कलर्स का शेड डिफरेंट होना चाहिए. नेक्स्ट यू नीड दिस ब्लैक शेड जिसको हम अपने आई लाइनर की तरह यूज़ करेंगे. एकदम लैशेस के साथ अप्लाई करना है इस तरीके से और का जो विंग है वो हम अपनी क्रीज की तरफ लेके जाएंगे. सो योर आईज प्रॉपरली लिफ्टेड. नेक्स्ट मैं एक स्मॉल आईलाइनर ब्रश लूँगी और जो मेरा विंग है उसको शार्प करूँगी. बट मेक श्योर कि जिस तरफ आपने अपनी क्रीज लाइन ड्रॉ की है आपकी विंग भी उसी तरफ होना चाहिए ताकि आपकी पूरी जो आईज है वो पूरी लिफ्ट हो जाएगी. सो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड एज यू कैन सी दैट हाउ प्रिटी दिस लुक्स. देन आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर ऑन माई लिप्स एंड इसी को ही मैं अपने लिप्स के अंदर पूरा फिल करूँगी. I love this reddish type of shade. Okay, so next I'm using this glitter on my eyelids. So my eyes will be enhanced and as you can see the difference. That's it for today. If you like this look, comment it down. And this is the final look.